Good afternoon, sir. Good afternoon, Arupa. How are you? I'm fine. Good. Arupa, so you have done MA in Gender Studies and BSc in Chemistry. Yes, sir. Should I start with chemistry? Yes, sir. Okay. So related with pollution, BOD and COD stand for? So BOD stand for biological oxygen demand and COD stand for chemical oxygen demand. BOD once again stands for? Biological oxygen demand. No, it is not biological oxygen demand. What is this? Can you recall again? It is biochemical oxygen demand, not biological oxygen demand. There is no word like biological oxygen demand. The BOD stands for biochemical oxygen demand. Now you tell me, what do you mean by biochemical oxygen demand? Sir, the biochemical oxygen demand means that the oxygen is required for the decomposition of the biochemical. So the oxygen is required for the decomposition of the solute and remain in the water. That is called biochemical oxygen demand. Okay. What do you mean by inert gases? The inert gases are gases like a helium, neon, and xenon that are having the total. So 18 electrons are present in their the state of the state of the electronic configuration. That is, there is no electron present to be member of the making the bond with other. And that's why these are inert. Yes, that's why these are inert. So, but there are more than two. You have named only two. Which are others? So that is helium, neon, xenon, radon, krypton, and one more I'm missing. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Two you have missed. Anyway, no problem. So, can you tell me any equipment or instrument in the room where you are sitting and where these inert gases are being utilized? Sir, the light bulb. Okay, good enough. So now, should I come to gender studies? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So, Arupa, if I say that road to gender equality starts from change in the mindset, do you agree? Yes, sir. I repeat, and then you will speak on that particular topic for about 2 minutes. Okay. Road to gender equity must start from changing the mindset. Go ahead. Yes, sir, I agree with that, because the equity and the equality we need for our society, that is for the male and female, we need for the first most the mindset, because we see that in the society the female is the mostly the engraved for the female itself. We are always called the patriarchal society for the reason for the gender inequality, but sometimes we see that the women member of the society also regards the patriarchal norm in the female. So I feel the mindset of the society need to be changed. This would see the society in an equal manner, that everybody irrespective of gender should be same, so they get the chance and the opportunity to become and to become empowered and get their emancipation and empowerment through it. And only the basis of gender, we could not say that they are discriminated or disadvantaged from the society. So I feel first and foremost the mindset. The people thinks that you are a woman, the gender stereotypes, gender roles are attached to us. So there, you are a woman, you cannot fly a flight, you cannot go to the engineering sector. So the mindset is there in the patriarchal society. So we need to change the first step of us. Okay.
Arupa, there are so many steps which have been taken up by the central government by implementing the centrally sponsored schemes related with women empowerment. Similarly, so many legislations have been made by the parliament related with women empowerment. Now, you tell me about the centrally sponsored schemes launched by the central government for women empowerment, and then come to the legislations which are meant for women empowerment and legislated by the parliament. So the central sponsored schemes are made by Center for Human Empowerment. That is, one is One Stop Center, Swedhar Greh scheme. Which scheme? Swedhar Greh. Sudhar Greh. Okay. Okay. Sir, Beti Padhao, Beti Bachao, and Mahila E-Heart also for the economic empowerment, and also the Nirbhaya Fund also. These are the central sponsor schemes, and also for their reproductive health, Janani Surikhya Yojana, Matruvandana Yojana, Mamata Yojana. These are. Good. We are going for the legislative. There is a POSCO Act, Protection of Child from Sexual Offences, 2012. The Sexual Harassment Case, 2013. And the Dowry Prohibition in 1961. And the Medical Termination of Pregnancy Act, 2021. Some more important. 73rd, 74th Amendment in the Constitution, very important, though that was done long back. That is a different thing. So, what exactly that is? That the political empowerment to the women in the grassroots level, the 73rd Amendment for the Panchayat Raj system, and 73rd and 74th as well. Yes, and the 74th for the municipality. The 33% of the women are reserved in 33% or at least 33%. At least. Okay, at least 33% are reserved for the women. In your Odisha, how much it is? 33% or more than that? So it is 50% in 50%. Odisha. So you use the word at least 33%, because in many states it is 50%, as you have rightly mentioned, for Odisha. Okay? Now, you tell me whether at all we can say that we are moving ahead from women empowerment to women-led development. So now we can say that we are one step ahead from the women empowerment to women-led development, because now women are in the many hierarchical position. They are representing India in the diasporical diplomacy also. Now in the gender mainstreaming also, women in are your there. Country, what is the position? In our country, the president of our India is the president is a woman. Okay. Finance minister, who is the finance minister? Woman. Preparing the budget and going for approval of the budget to another woman. That's the president. Before presenting it in the parliament. So again, woman. 14% reservation for women in the parliament. No, not reservation, 40% representation, 14% in the parliament, in Lok Sabha, I mean. 14% are women. What else? And women are holding more than 1/3 constitutional posts in our country. How come? Lakhs and lakhs of the posts women are holding, which are the constitutional posts. How? So through the first and the foremost, the legislation in the education and therefore the empowerment. That is, I am saying more than 1/3 of the constitutional posts women are holding, which are lakhs and lakhs in number. At the grassroots level, which you have mentioned through 73rd and 74th Constitutional Amendment, those are the constitutional posts. Okay? So lakhs and lakhs.
Not in single digit, not in 2 digits, not in 3 digits, lakhs and lakhs. So it is, we are not one step ahead, we are much ahead. Okay. So definitely we are moving ahead from women empowerment to women-led development. What else? So many entrepreneurs, women entrepreneurs, you can name some. Okay? Huh? Like Falguni Nair, Yeah, Aditi Gupta. that's right. So women entrepreneurs, permanent commission for women, change in the mindset. Though that is as per the intervention of the Supreme Court, by the Supreme Court, that is a different thing. Permanent commission and 108 lieutenant colonels are to be promoted to the rank of colonels, women. 108 women are to be promoted from lieutenant colonel's post to colonel's post. And colonel's post is treated as leading role. Leading. Though that is not related with combating, that is a different thing. But it is having leading role in other fields, not exactly related with the combating. Okay? What else? And also, sir, in the judiciary level, the first and foremost woman is going to be our Chief Justice of India, Bibi Nagaratna. And Good. अब आप थोड़ी बहुत आगे नहीं है, you're moving fast. Okay. And this time, if you see civil services result, UPSC, 33-34% of them are women, though that is not as per reservation and all that. At their own, they have done like that. Yes. Okay. 1/3 civil servants of the country this year exam. That's also a very good achievement by women at their own, not at the mercy of others, not related with the reservation like that. Okay. So now SDGs, you might be knowing SDG. So SDG, how many SDGs are there and how many goals are there? How many goals are there and how many targets are there? There are 17 sustainable development goals and 194 targets in the goal. Okay, so sustainable development goal number 1, what is that? The zero hunger. No, no poverty. No poverty. Zero poverty and no second in the no hunger. No hunger, and third one? Health, that is called. Good health and well-being. And fourth one? The quality education. Very good, quality education. And then fifth one? The gender equality. Yeah, I will ask only up to that very point, or if you want, I can ask further also, because it relates with gender equality. Anyway, so if we take into account all these 5, taken into consideration, then in which field we have done much better, related with which SDG? Rather, not country as a whole, in your state, you can tell me that in this particular sustainable development goal, Odisha has done much better. Sir, Odisha has done in the sustainable development goal 2, the zero hunger and the health and well-being, that is sustainable goal number 4, and also in this SDG number 5, the gender equality. Okay, now as you have just mentioned, related with this poverty and all that, so multi-dimensional poverty index, you know multi-dimensional poverty index, where does India figure in that particular index and how it is prepared and what is the status of your state? Sorry sir, I'm just forgetting it. Otherwise, I think you might be knowing about what is this multi-dimensional poverty index. You might be knowing, no? Yes, sir. That is for the economical health in the basis of their. That's right. Education, health, and living standard. So recently, the figure has been released by the UNDP and that Oxford Poverty and Human Development Initiative. So you have gone through today's newspaper? Yes, sir. But very
not for depth उसे but देख in the लेना, looking. है ना? अच्छा लगेगा आपको देख के भी कि 15 इयर्स में हमने क्या प्रोग्रेस की. बहुत अच्छी ठीक है. प्रोग्रेस 15 इयर्स में, और हम जस्ट हाफ पे पहुंच गए जितना हमारा पहले वो था, उसके हमने 50% और अचीव कर. तो बड़ा एनीवे, tourist destination in your state, very important tourist destinations, name them. So the temple, Puri Jagannath temple, Lingaraj temple, and Taratharini temple in Ganjam. And there are the wildlife sanctuaries and national parks like Ghadial Wildlife Sanctuaries in Kendrapada and in Mayurbhanj. And the river system is like Mahanadi river system, and it's ecotourism and Konark ecotourism. Kalinga War, when was it held approximately? So And what were the main reasons behind this Kalinga War? And this was the deadliest ever fight. The Kalinga War happened in 281 BC before Christ. 281 or I think 261. Anyway, 261 BC or 281. Good. So, which were the main reasons behind this? The main reason behind it. Why Ashoka wanted to capture that particular territory, Kalinga? Now, that covers which state? Odisha. Odisha and southeastern Andhra Pradesh, little bit. Odisha mainly, and southeastern Andhra Pradesh, little bit. Anyway, good. So, some more questions? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Related with what? Related with current affairs? Yes, sir. Okay. So, neighborhood first. Neighboring countries, we are having different types of relations. Some of them, with some of the countries, we are having very good relations, and some of them we are having very, I mean, not good relations. Not a good relation. If we don't call it bad, then not very good, we can say bad too. So now you tell me with which countries, name two countries with which we are having very good relations, neighboring countries. With neighboring country, we have very good relationship with Bhutan and Bangladesh. Okay, Bhutan and Bangladesh. Okay, come to Bhutan. Recently, an agreement has been signed between China and Bhutan related with border agreement. So, do you have any idea related with that? These are the issues which are under consideration between these two countries, and how that is going to affect our relations with Bhutan, or that is going to affect us. Sorry, sir. I have Okay. not read it. So best with Bhutan and Bangladesh, you told me. Then worst? Pakistan. Pakistan and Nepal, we can say for now it is. No, worst. Pakistan and Afghanistan. Pakistan and Afghanistan. It could be China or so. Anyway, China. And so now your interview is over. Now you tell me, how do you rate yourself in terms of percentage? It could be. I think it will be 40 to 50%. No, not at all. Not at all. Much more than that. At least 60-65%. At least. But it has to be improved. To be doubly sure that you need not appear in the examination once again. So, कब है आपका interview? So 16 को है, Sunday को. Sunday को है, अच्छा.
इतना काम होता है आपके स्टेट में कि संडे को भी करना पड़ता हाँ, वो हमारे लिए वो सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है और हमें संडे में डाल दिया है बहुत जल्दी। 5 दिन की 6 दिन गैप दिया गया है रिजल्ट्स और इंटरव्यू की डेट के लिए। है? 16 तो अब आपका बिल्कुल आ गया है ना। अब आपको हाँ। छोटा छोटा मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। ओवरऑल गुड कैंडिडेट है, गुड नहीं, वेरी गुड कैंडिडेट। वेरी गुड से आउटस्टैंडिंग होना है। क्या कमी है? एक तो बिटिया जी तुम घबरा रही हो थोड़ी सी, क्यों घबरा रही हो? घबराना नहीं है, सबसे पहली बात। पहले तो गुड पॉइंट्स बता दूं। ऑनेस्टी कैसे रिफ्लेक्ट होती है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इससे रिफ्लेक्ट होती है कि आपको नहीं पता तो आप सिंपली कह रही हैं कि आई डोंट नो, रादर देन गिविंग रॉन्ग आंसर्स। वो ब्लफ करना, ये ट्रेट है जो कि सिविल सर्वेंट में सबसे पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी, सबसे पहला ट्रेट। दूसरा ट्रेट क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आप अगर 2-3 आंसर नहीं दे पाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझ लो। 2-3-4 आंसर नहीं दोगे कोई, अब वो आंसर शुरू में भी हो सकते हैं, तो शुरू में ऐसा मत कर लेना कि मूड खराब कर लो अपना कि जी 2-3 दिन लगातार मैंने तो 2-3 नहीं बताया। कोई फर्क नहीं, कोई खास फर्क नहीं। फर्क तो है, कोई खास फर्क नहीं। खास फर्क किसका है कि आप घबरा जाओ, है ना, कॉन्फिडेंस खो दो, वो उससे ज्यादा मार्क्स कटेंगे। गलत आंसर देने के बहुत मार्क्स कटेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, प्रिसाइज एंड कॉन्साइज आंसर होना चाहिए आपका था। ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज वो भी ठीक था। ठीक है, और आपका कन्वर्सेशन बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। ईच एंड एवरी सेंटेंस वाज क्लियरली अंडरस्टूड। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर देने में, उसको फ्रेम करने में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करने में टाइम लगता है। वहां पे यू कैन बोरो सम टाइम। कैन आई टेक फ्यू सेकंड्स सर? ऐसा करके आप अपना फ्यू सेकंड्स में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्यों कभी कभी क्या होता है कि आपने पॉइंट तो सही बताया लेकिन मेन पॉइंट छूट गया। तो मेन पॉइंट तो नहीं छूटना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना है। कभी कभी टाइम लगता है 2-4-5-7 सेकंड का। कैन आई टेक फ्यू सेकंड? ऐसा करके आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, सिंस यू आर ए वुमेन। तो आपने काफी कुछ आंसर उसका सही दिया था। और मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको प्रायोरिटाइज करने के लिए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने इंक्लूड किया था इसमें से काफी, मैं ऐसे ही जस्ट प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। आपने ये बोला था ये भी, सुरक्षा समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और मैटरनिटी लीव रिलेटेड। पहले होता था 12 वीक्स का, अब है 26 वीक्स का। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, है ना, योजना, स्टार्टअप इंडिया, और रिलेटेड विद लेजिस्लेशन आपने काफी बताए थे, लेकिन सबसे पहले तो वही बताना था 73rd 74। और उसके अलावा और जो आपने बताए कई बताए। और उसके अलावा क्या? ट्रिपल तलाक एक्ट। ट्रिपल तलाक एक्ट का नाम क्या है? द मुस्लिम वीमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन मैरिज एक्ट। ठीक है, द मुस्लिम वीमेन राइट टू। कभी भी एक्ट का नाम बोलेंगे उसके पहले द जरूर लगाएंगे, द लगा होता है ना। द मुस्लिम वीमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन मैरिज एक्ट। सिमिलरली आर्टिकल 35A एब्रोगेशन। एक और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कीपिंग लेडीज फर्स्ट, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, दोनों के लिए है, जेंट्स के लिए भी है लेडीज के लिए भी है। ठीक है, तो वो हो गया। और परमानेंट कमीशन फॉर वीमेन जो मैंने बताया आपको। और उसके अलावा वो तो ये मतलब वो लेजिस्लेशन से रिलेटेड हो गया और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो गई। ऐसा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड द वीमेन हु हैव मेड अस प्राउड ड्यूरिंग पास्ट 3 to 4 years इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, कौन कौन है? बोलो कुछ नाम। सर गीता गोपीनाथन, ठीक सौम्या है, स्वामीनाथन। स्पोर्ट्स में गीता गोपीनाथन। सर स्पोर्ट्स 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 सर भवानी देवी हाँ। एंड इन फेंसिंग हम्म। एंड
देखो बहुत सारे हैं, अब आप सुनिए, आप में से इसमें ज्यादातर जानती होंगी, ज्यादातर पीवी सिंधु, हिमा दास, दीपा कर्माकर, सेना नेहवाल, साक्षी मलिक, फोगाट सिस्टर्स, मैथिली राज, मेनका बत्रा, ड्यूटी चांद, है ना, शेफाली वर्मा, सो मेनी। ठीक है, तो ये है, तो वीमेन रिलेटेड इशू। अब आप क्या करेंगे, अभी टाइम बहुत कम है, इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करेंगे। बी दीज रिलेटेड विद द सब्जेक्ट विच यू हैव स्टडीड, बी दीज रिलेटेड विद द ऑप्शनल सब्जेक्ट, बी दीज रिलेटेड विद योर स्टेट, करंट अफेयर्स of your state, current affairs of the country as a whole, world as a whole. ठीक है, the matters which are in public domain, और न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं भूलेंगी इस बीच में, रोजाना पढ़ना है, उस दिन भी पढ़ना है जिस दिन इंटरव्यू है। yes. यही चीज है। अब आपको कोई क्लैरिफिकेशन कहीं पे कुछ चाहिए, कुछ हो तो बताओ। सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखोगे जो मैंने बताया? सबसे पहला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो है, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस। और वो मतलब कॉन्फिडेंस कैसे रिफ्लेक्ट होगा कि घबराना नहीं है, नहीं पता तो उतने ही प्लेजेंटली आंसर दीजिए एज इफ इट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट आई डोंट नो। यस, ठीक है, उसमें घबराना नहीं है। तुम्हारा ये सबसे बड़ी कमी मुझे लगी यार, है ना? यस, आज है, उस दिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, बाकी सब ठीक है। कॉन्फिडेंस, वैसे कॉन्फिडेंस है आपको, आपका प्रिसाइज कॉन्साइज आंसर भी है, आपका कन्वर्सेशन भी ठीक है, लेकिन घबरा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे घबरा रहे। ठीक है ना, वो नहीं, ठीक है। थोड़ा घबरा रही थी, है? अब नहीं करूंगी, वो थोड़ा थोड़ा आपका घबराहट बहुत हो अच्छे रहा है। आंसर से, तब भी आंसर बहुत अच्छे नहीं, गलत तो आंसर देना ही नहीं है, और बहुत अच्छे आंसर होने पे भी घबराना नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि देयर इज अ क्वेश्चन फॉर विच देयर आर 5 पॉइंट्स एंड यू कैन रिकॉल ओनली 3 ऑफ देम, आफ्टर दैट यू कैन से sorry sir, there is much more but I am not able to recall at this moment. ठीक है? यस सर। ये है। और कोई पॉइंट बोलो, कुछ है तो बोलो। ठीक है? About my grammar and my conversation. नहीं, ग्रामर एंड ऑल दैट इज एब्सोल्युटली ओके, उससे बहुत फर्क भी नहीं पड़ेगा, और रीजनेबली गुड है, ये मैं भी आपको बता दूं, रीजनेबली गुड। वो कैसा होना चाहिए कि भाई क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट एवर यू आर सेइंग, वो क्लियरली अंडरस्टैंड दूसरे को करना चाहिए, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, जहां तक फ्लुएंसी का सवाल है, ना तो बहुत ज्यादा आप इतना फास्ट बोल रही थी, ना बहुत ज्यादा स्लो थी, वो भी रीजनेबली गुड थी फ्लुएंसी। कभी कभी क्या होता है कि कोई इतना तेज वो बोलते हैं कि वो काफी सारे वर्ड्स भी क्लियर नहीं हो पाते हैं कि उन्होंने क्या बोला, मतलब उसको खा जाते हैं वर्ड्स। तो वैसा नहीं करना है, वो भी अच्छा नहीं समझा जाता है कि आपके समझ में नहीं आया, इतना जल्दी बोल दिया कि वो समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है, इस तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ध्यान उसी तरफ, मुझे प्रोबेबल क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं और उनके जवाब तैयार करने हैं। थोड़ा सा ही टाइम बचा है। वीमेन है, आप क्योंकि वीमेन कैंडिडेट हैं इसलिए मैंने वीमेन पे ज्यादा वो दिया, आपका क्योंकि जेंडर स्टडीज भी सब्जेक्ट है इसलिए मैंने उस पर ज्यादा दिया। इससे रिलेटेड जरूर सवाल होंगे, जेंडर से रिलेटेड। और ये वीमेन एम्पावरमेंट, इसको आप ऐसे वर्ड्स को अगर यूज करेंगे ना, वीमेन लेड डेवलपमेंट, दिस दैट, वो बहुत अच्छा है, ये असर करेगा। यस सर। है ना, और ये तो जो अगर आपका बायोडाटा ठीक से कोई पढ़ता है तो जेंडर स्टडीज से रिलेटेड ये होगा ही, इन्हें आप खींच खाच के कहीं पे भी उसे आंसर में इन चीज को ले आए। जी सर। ठीक है ना, वीमेन लेड डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। यस सर। फर्स्ट सिटीजन ही आपका है। यस सर। तो वन स्टेप अहेड नहीं है, हम बहुत अहेड है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। भाई एक चीज सबसे पहले घबराना नहीं, जी सर। याद रखना, सोच के जब एंटर करो तो ये बताना मुझे ये चीज सबसे पहले सजेस्ट की थी। ऑनेस्टी तो ऑलरेडी है ही, है ना, ऑनेस्टी वो फर्स्ट नंबर पे है वैसे, बस मुझे घबराना नहीं है, आंसर नहीं दिया जा रहा तो कोई बात नहीं, मैं घबराना।
Yes. Okay, all the best. Thank you, sir. Thank you so much. You can.